जय भीम, नमो बुद्धाय। सीमा सिस्टर कैसी हो आप? स्वागत है आपका। और बताओ कैसी हो दीदी जी? बोलो। मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? थोड़ी सी काम में बिजी हूँ बहन, मशीन लगाई हूँ, कपड़े धो रही हूँ। आप बताओ कैसी हो? खाना पीना हुआ सीमा सिस्टर? तबीयत कैसी है अभी आपकी? आकाश आ जाओ। मम्मी मेरा पानी कभी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। मेरा पानी कभी गर्म करो। नहा के चटपटा फिर उसके बाद इनको हाँ डालो मम्मी, पानी बहुत ठंडा है, गर्म। अरे देखो कितना गर्म। अरे मीडियम ही एकदम वो। अरे ठंडा हो जाता है 5 सेकंड में। पैजामा निकाल के दरवाजा बंद करके हमें सब देखते हैं। दौड़िए अंदर रख लो। हेलो एक काम करो गाइस। गाइस मैं दौड़े ले ले। पाई को कोई खेल नहीं, पाई को ले ले। वो क्या सुई में ये पाई भी का जान ना करी। अरे उसको लगती सुई लगी। खाना बना रही हूँ। ओके सिस्टर बना लो। कल रात से लाइट मेरे यहाँ नहीं है, मेरा फोन भी नहीं चार्ज है। आपका इंतजार सुबह से कर रही थी और बैटरी खत्म होने वाले है। बहन जानती हो ना, सैटरडे बच्चों की छुट्टी है तो काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। काम बहुत हो जाते हैं बहन, क्या करें, टाइम नहीं मिल पाते हैं। मुकेश कुमार, स्वागत है भैया आपका, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, जय भीम, कैसे हो आप? शिवांगी भारती, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, मोस्ट वेलकम है। कैसे हो आप? कैसी हो आप? खाना पीना हुआ आपका? आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ सिस्टर, आप कहाँ से हो? जौनपुर से? अच्छा, जौनपुर से हैं, यूपी जौनपुर। हम भी आजमगढ़ से हैं, आपके पड़ोसी। हम भी आपके पड़ोसी हैं सिस्टर जी। और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं? सब्सक्राइब कर दिया, ओके थैंक्स। कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर आपका चैनल होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। आपका चैनल है क्या यूट्यूब पर? ठीक है।
नहीं। ओके थैंक्स। वेरी नाइस। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका लाइव में। दामोदर राम, स्वागत है भैया, कैसे हो आप? हाँ, सीखो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तभी आता कोई चीज में, टाइम ब्रेक नहीं आएगा।
तेरी बाहों ठुकराते कौशल, जय भीम नमो बुधाय, जय भीम नमो बुधाय भैया। अच्छा भैया, खाना वाना नहीं खाई हूँ भैया, अभी तो काम कर रही हूँ, खाना बना भी नहीं है। अभी कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगाई हूँ। खाना तो बनेगा 1 बजे।
जल्दी करो, कपड़े निकालो। थोड़ा फास्ट करो। तो ये तो निकले। देखो उधर कपड़े पहले पोंछ लो। हाँ ऐसे कपड़े जो पोंछ लो, गीला है पोंछ, चल बार बार पोंछ लो। चल कपड़े तो भैया रखी हूँ, हाथ तेल लगाओ ना इनको पहन। कौन से पोंछो, कपड़े पे सब पोंछो सही से, कपड़े पे सब पोंछो सही से, पानी पानी मत पोंछो सही से। और फिर पानी को पीठ पे पूरा पानी लगा हुआ है। अच्छा ये नहाइए तब में कि जाए कि तब नहाते हैं? नहीं ट्यूशन वाला ना 11 बजे ट्यूशन। अच्छा एक काश तब तो नहीं जा पाएगा तू, तब तो सब जाएगा चले- माँ। मैंने कहा नहा ले तभी तो जाएगा। मैंने कहा नहा ले ट्यूशन जाना, कह रहे नहीं मैं आके नहाऊंगा। मैंने कहा अभी आते ही वहां से लोग चले जाएंगे तब नहाएगा तब। हाँ हाँ गया नहाने। जब तक तू आएगा तब तक सब चले जाएंगे। हमें लगा था पानी सही ना है। पानी सही कैसा नहीं। लगा? अजीब से लगा। पानी हो सकता है चल भी जाता है, कभी कभी पानी आता ही है ऐसे। ये साला क्या है इसको? हाँ? रात में भी भरा गया है। कभी कभी होता है पानी तो स्वाद चल जाता है। हमें लगा था बिना दारू का पानी पीने जाता है।
ये कहीं की समय में सब तू बता ना कि छुट्टी लेके कल मैं भाग साढ़े 12 बजे आइयो। नहीं हाँ तो 12:30 बजे आएगा, 5 मिनट में घर नहीं आएगा। और ये छुट्टी भी लेके चला आएगा। अरे कौन से लगेगा मैं गली में ही लाइक डन, थैंक यू पूनम दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय, कैसी हो आप? जय भीम नमो बुद्धाय सभी को मेरी तरफ से थैंक यू दीदी, थैंक यू। कैसी हो पूनम दीदी आप? खाना पीना हुआ आपका? हाँ दीदी खाना पीना हो गया, आपका हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ दीदी, हमारा तो अभी खाना ही नहीं बना है। नाश्ता सबका हुआ है, कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगाई हूँ। आज सैटरडे है, बच्चों की सबकी ऑफ है, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और आज कहीं जाना भी है। कपड़े डालो बेटा फास्ट, टाइम हो गया ट्यूशन का। और सब बढ़िया है पूनम दीदी, घर परिवार में?
जय भीम सोनू भैया, भारती भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का है। थैंक यू सो मच। क्या बेटा, क्या हुआ? रोना नहीं आ रही? जय भीम भैया, क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी, थैंक यू भाई, सेम टू यू। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आज बहुत बिजी हूँ, मशीन उशीन लगाई हूँ, कपड़े धो रही हूँ। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। आपका हुआ? और बताइए, फैमिली में सब लोग, गांव में सब लोग कैसे हैं? भारती भाई बताओ। थैंक यू सोनू भैया। एक तरफ लड़ाई चल रही है अभी। क्या हो गया? थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। मैं चली गई थी, क्या बोल रहे थे भारती भाई बताओ? घर में सब लोग कैसे हैं? घर में सब लोग कैसे हैं? आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, खाना नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोग ठीक हैं दीदी? अच्छा भैया, ठीक ही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर से भैया सोनू भैया को बोल रही हूँ। भारती भाई सोनू भैया को, भाई सोनू भैया को तो हम भैया ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच। सोनू भैया किधर हैं? सोनू भैया पता नहीं किधर है, मैसेज आ रहा, वो किधर है ये नहीं पता। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय प्रकट हो गए सोनू भैया, नाम लेते ही प्रकट हो गए भारती भाई। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया, भारती भाई बोल रहे हैं सोनू भैया। आप कैसे हैं सोनू भैया? जय भीम भारती भाई, कैसे हैं आप? आपका खाना पीना हो गया है सोनू भैया? भारती भाई पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सोनू भैया बोल रहे हैं अभी तो सोया हूँ। काहे हंस रहे हो भारती भाई? एक तरफ अलार्म लग रहा है। मैं भी ठीक हूँ सोनू भैया। समझ नहीं आता कोई बात नहीं। जब मैंने उसको डांट दिया तो चुपचाप बैठ जा।
ऑटो स्टार्ट है आपके पास सोनू भैया? अरे भैया इधरो ही ऑटो स्टार्ट है, इधरो ही ऑटो स्टार्ट है। हाँ बहुत परेशान है, तब से 1 घंटा से चुप्पी करा रहे हैं। एक तरफ काम एक तरफ ऑटो स्टार्ट, हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। सिर्फ साइज में फर्क है। अरे भाई साइज में फर्क को तो चलो, छोटी सी बच्ची है, एक लेखे रोएगी कोई बात नहीं है। ये 9 साल की समझदार हो गई, इसको जरा सा कोई छू दिया गुस्से में बोल दिया बस, कि मतलब हमेशा प्यार से ही बोलो, मत डांटो। अभी रोई रही है ना? हाँ? तो कहाँ छुई तुम? मैंने मारा। फिर किसने मारा तुम? अच्छी लो रही है, फोन देख रही थी, लो ली थी। अपने वैसे ही रो रही है? मैंने नहीं, तुमने ही कुछ किया उसको? नहीं किया ना कुछ। मैं क्या करूँगा, छोटा हुआ भी। हाँ छिपकली है, छिपकली छिपकली रुलाई है भैया उसको। मैं चिपकली दिखता हूँ। कह रही मैं छिपकली दिखती हूँ। कौन बोला है ये? मामा कौन से? सोनू मामा अच्छा, मैं कोई से कमेंट कह रही अभी इनको सबक सिखाऊंगी, रुक जा। गई दूसरे फोन पे गई सबक सिखाने, अभी सबक सिखाएगी आपको। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रहा। वो नहीं भैया, याद आने वाली तो रो रही है, ये नहीं कभी रोई, ये स्कूल में भी नहीं रोई ना घर पे रोती है जल्दी। सबक सिखाने गई है दूसरे फोन में सोनू भैया, देख लो, आपने 2 भेजा उसने 5 6 भेजा। सोनू भैया। हाँ करे मैं अभी इनको सबक सिखाती हूँ। सबक सिखाऊंगा मैं भी, हाँ सिखाओ। रात में भी सोनू भैया से लड़ी थी। सबक सिखाने गई है।
थैंक यू सो मच। अभी जंग चल रही है यहाँ, मामा भांजे में जंग चल रही है। चलाओ जंग आप लोग, हम भी बिजी हैं, कपड़े धो रहे हैं।
जय भीम, नमो बुद्धाय वीर भैया जी। लाइक डन, थैंक यू सो मच। कैसे हो? कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आप कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, थैंक्स। और खाना पीना हुआ आपका? हाँ, मैं समझ गई थी। खाना पीना हो गया आपका? आपको कैसे पता चला मैंने ये लिखा है? ऐसे समझ लिए थोड़ा बहुत, पर ऐसा कुछ नहीं था। हाँ जी, हो गया है। ओके भैया। और भाभी कैसी है भैया? थैंक यू सो मच भैया। मैं भी थोड़ा ना कपड़े धो रही हूँ, इसलिए बिजी थी थोड़ी सी। अभी आधा एक घंटा ऐसे ही बिजी रहूंगी। शिवानी ठीक है? ओके भैया। प्रथमवीर बाबू कैसे हैं? प्रथमवीर भी ठीक हैं? ओके भैया, ओके, थैंक यू। स्कूल गए हैं? अच्छा भैया, आज सैटरडे को भी स्कूल रहता है वहाँ? यहाँ तो सैटरडे को ऑफ रहता है। आज इसको स्कूल में क्रिसमस डे पार्टी। अच्छा, क्रिसमस की पार्टी है। हाँ भैया, यहाँ तो ना बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई है प्रदूषण की वजह से दिल्ली में। बैग लेकर नहीं गया। हाँ, वो तो पार्टी होती है, बैग लेके नहीं जाए। और बताओ भैया। पंजाब में स्कूल खुले हैं? नहीं, स्कूल तो यहाँ भी खुले हैं। 5वीं क्लास से ऊपर वालों को खुले हैं, 5वीं से नीचे वालों की छुट्टी है। प्रथम फिर तो 6 क्लास में है ना भैया? शिवांशी क्या कर रही हो बेटा? फोन लेके क्या कर रही हो ये सब? 5th में? अच्छा, 5th में। 5th में है। हमारा बेटा तो 8 क्लास में है। 8 में। लड़कियां 3rd क्लास में है। अब 6 में हो जाएगा। 6 में अभी तो मार्च में होगा ना भैया? मार्च, लास्ट मार्च में क्लास होती है 6 की, मार्च में। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। वही मैं भी कह रही हूँ, यहाँ पे भी तो वही है सिस्टम। गांव में जुलाई में होते हैं, यहाँ मार्च में ही होते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और बताओ सिस्टर, रात को आप सो गई थी क्या? सो गई थी भैया, फोन चलाते चलाते सो गई। नींद आ रही थी, सो गई।
इतनी टाइम सुबह से उठ के काम कर रही हूँ, काम खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं करी हूँ, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, सुबह से काम में लगी हूँ सिर्फ। अभी कपड़े धो रहे हूँ, वो भी फाइनल नहीं हुए हैं, मशीन लगी है। आज तो इधर भी ठंड बहुत है। हाँ भैया, हवा बहुत चल रही है ना, ठंड है। मेरा तो हाथ सुन्न हो गया, पर क्या करूं, पानी इतने ठंडे है, बर्फ फेल है। कोहरा ही कोहरा हर तरफ। नहीं भैया, इधर कोहरा नहीं है, पर ठंडी है। आज यहाँ कोहरा नहीं है। कल यहाँ मौसम ऐसा था जैसे बारिश होगी, ऐसा लग रहा था। कोहरा नहीं है यहाँ। ये अब ठंडी पड़ेगी भैया। अब ये दिसंबर लास्ट मंथ और जनवरी, यही तो ठंडी होती है। जनवरी फरवरी लास्ट में जाते जाते तो सर्दी धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है। आज लुधियाना में कोहरा ही कोहरा है। अच्छा भैया, हाँ बेटा। कूदो मत, मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। शिवानी को क्रिसमस पर जाना भी है। अच्छा, स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना है भैया भाभी को। क्या बेटा? काम कर रही हूँ। चर्च जाना है 25 दिसंबर को। अच्छा, फिर कहाँ जाएंगे? स्कूल पे कहीं और? स्कूल क्यों जाएंगे सिस्टर, फिर कहाँ? अच्छा हाँ भैया, सॉरी, मंदिर में। चर्च गुरुद्वारा होता है ना, वहाँ पे होता है। वो तो जीसस को मानती हैं। अच्छा भैया, गुरुद्वारा अलग होता है। सॉरी भैया, तब नहीं जानती हूँ मैं। क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं। अच्छा भैया, हिंदू मंदिर। ओके भैया, थैंक्स बताने के लिए। सिंपल।
सिंपल होता है टेम्पल होता है भैया। सोनू पाजी किधर है? सोनू भैया आए थे अब तक लाइव में, शायद ड्यूटी जाएंगे ना अभी, नहा धो रहे होंगे। टेम्पल वही तो कह रही हूँ मैं भी। कल मेरी लिखी रचना देखी थी। हाँ भैया देखी थी। थैंक यू। एंजॉय के साथ साथ। कॉपी नहीं थी, मुझे पता है कॉपी नहीं थी, कॉपी अलग ही दिख जाती है भैया, कॉपी अलग दिख जाती है, इतना मुझे भी पता है। आपने कल कॉपी नहीं किया था, लेकिन परसों तो दीदी ने कॉपी करके आपको दिया था, खुद के दिमाग से बनाए। खुद के दिमाग से बनाए थे। परसों तो मानता हूँ सिस्टर ने लिख कर दी थी, हाँ परसों तो शारदा दीदी ने लिख के दिया था। पर फिर भी तो आप हम लोगों से छुपाए थे। कैसे हैं? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। दिव्या दीदी थैंक यू। मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? आप कैसी हो दीदी? स्वागत है आपका लाइव में, कैसी हैं आप? हम भी ठीक हैं। ओके दीदी थैंक यू, ठीक ही रहना चाहिए। हाँ भैया, जब हारने वाली बात आ गई ना तो आप लोगों ने फिर पीछे हट गए। जब पैसे की शर्त लगी थी, रवि भैया बोले कि वीर जी ऐसे नहीं बोल सकते हैं, शर्त रखो। मैंने कहा ठीक है शर्त रखो, 500 रुपया साधना दीदी के लाइव में सुपर चैट कर देना। बोले पक्का कर देंगे। जब हारने वाली बात आ गई ना, बोले तो इसमें तो दीदी की भी गलती है, दोनों लोगों की है। पेंडिंग में रहेगा। थैंक यू दिव्या दीदी। थैंक यू दिव्या दीदी, थैंक यू सो मच। अब कैंसल? अच्छा कैंसिल हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। बाय बाय दीदी, दिव्या दीदी बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू
कोई सुपर चैट नहीं। क्यों वीर भैया जी? मैं तो नहीं, फिर मैं समझूंगी आप हार गए हो। कंजूसी दिखाना शुरू कर दिए दोनों भाई, रवि भैया भी और आप भी। थैंक यू दिव्या दीदी, थैंक यू। लो जी, हार क्यों गया? क्यों नहीं भैया? शर्त हारे नहीं हो, पहले ये बताओ। आप लोग शर्त नहीं आ रहे हैं? किसको? मैंने नहीं देखा, मेरे सामने होनी चाहिए ना। मैं आज दीदी से पूछूंगी उनके लाइव में। वीर भैया जी सही बोल रहे हैं या झूठे? 500 की शर्त लगी थी, इसीलिए कल से रवि भैया नहीं दिख रहे हैं। इमली वाला शॉर्ट देख लो। मैं देखूंगी नहीं, मैं दीदी से पूछूंगी डायरेक्ट। पाँच सौ नहीं, 5 रुपए लगी थी। अच्छा, 5 रुपए लगी थी, सही बात है। झूठ कितना बोलोगे वीर भैया जी? पर बहनें पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पहली बात तो मैं हारा ही नहीं। क्यों नहीं? फिर आप हमसे झूठ क्यों बोले थे? तो सुपर सेट किस बात की? अच्छा, आज दीदी से बोलनी पड़ेगी आपकी सारी सच्चाई। आज साधना दीदी से पक्का सब बताएंगे। सिस्टर को पता है? अच्छा, सिस्टर को पता है, सिर्फ हम ही हैं, हमसे लोग झूठे बोल के निकल जाते हैं। सिस्टर ने ही तो लिख कर दी थी सारी भाई बहन वाले। नहीं, ये बात नहीं, ये तो हमें पता है, दीदी को पता है, दीदी ने ही लिख के दिया था। बट आप हमसे झूठ बोले थे ना। लिखने वाली बात नहीं थी, झूठ बोलने वाली बात थी। आपने हमारे लाइव में बोला था ना कि मैंने खुद से बनाया है कंचन सिस्टर। और क्या पता चला, सोनू भैया की लाइव में कुछ अलग ही चल रहा है। ये बात जब मैंने रवि भैया से बताई, रवि भैया बोले नहीं सिस्टर, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो? बोले शर्त लगाओ। मैंने कहा ठीक है, अगर सच्चाई तो दीदी के लाइव में जाकर सुपर चैट करना है 500 की। उन्होंने बोला बिल्कुल हम करेंगे। जब मैंने उनको स्क्रीन शॉट भेज दिया ना, तो फिर बोले नहीं नहीं, मैंने खुद से ही बनाया था। ना ना, मुझे पता चल गया, मेरे पास स्क्रीन शॉट है।
क्योंकि आपने आपने खुद ही अपने से लिखा है। बात होती तो बदल सकती थी, लेकिन प्रूफ है ना, अब उसको नहीं बदल पाओगे। उसको नहीं बदल पाओगे, वो तो आपके सामने आ जाएगा। बस सिस्टर ने लिखा था, पर भेजा तो मैंने ही था ना, तो झूठ किस तरह का हुआ। अच्छा वीर भैया जी, मुझे अब पता चला कि सच्चाई भी दबाने के लिए कितनी कोशिश की जाती है। अब पता चला वीर भैया जी। आज के टाइम में सच में सच्चाई लाना इतना आसान नहीं है। पहले खुद को झूठा बनना पड़ता है। सही बोला कि नहीं वीर भैया जी, बताओ। वो क्या बोले फिर? आपने रवि पाजी को प्रूफ भेज दिए? हाँ मैंने भेज दिया था। मैं सच का देवता हूँ। अच्छा सच के देवता हूँ। अच्छा, तभी तो झूठ बोल दिए। जो सच के देवता है वही झूठ भी बोलते हैं भैया।
थैंक यू दीपक भैया, जय भीम नमः बुद्धाय। कैसे हो आप? हेलो कंचन जी, बोलो भैया। सुबह से बहुत बिजी थी, काम आज बहुत काफी था। हम ठीक हैं, ओके भैया। खाना पीना हुआ आपका? हम भी ठीक हैं भैया, हम भी ठीक हैं। आज सुबह से बिजी हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा था, आज काम ही कर रहे थे। अच्छा, हो गया खाना, अच्छी बात है। कल मैं बिजी था, हो जाता है भैया, कभी कभी ना काम ज़्यादा हो जाते हैं। पर कमेंट कर रहा था, आप ड्यूटी में थे ना भैया। हम लोगों का काम ऐसा होता है ना, अब घर में खाना बनाना, चलो थोड़ा वैसा होता ना। मैं आज बहुत काम था, बच्चों का छुट्टी था ना, मशीन लगाई थी, कपड़ा बहुत सारा धुली हूँ। आज कहीं भी जाना भी था, कहीं बच्चों को तैयार करी, नहला धो के उनको तैयार करी, फिर उनको भेजी हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं गई हूँ, अभी हस्बैंड भी नहीं गए हैं। मैं भी थोड़ा सा नहा के छत पे आई हूँ, अभी मैं भी जाऊंगी, पूरी फैमिली चली गई। आपको सपोर्ट कर रहा था, मैं समझ सकती हूँ भैया, पर आप मेरी भी मजबूरी समझ सकते हैं। शाम को हम भी सपोर्ट कर देंगे आपका। शाम को कब लाइव चलेगी भैया, एक बार बताना। 8 बजे या 9 बजे? 9 बजे शायद। 9 बजे हम आपको सपोर्ट कर देंगे। हाँ 9 बजे ठीक है भैया, मैं 9 बजे सपोर्ट कर दूंगी आपको। ओके भैया, थैंक यू। ओके ओके भैया, थैंक यू, कर देंगे हम। हम अकेले काम करने वाले काम भी बहुत हो जाते हैं भैया, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, और यहाँ खाना पीना का भी रूल अलग हो जाता है। मॉर्निंग में भी बनाओ खाना, दोपहर में भी, शाम को भी। जब लोग खाते हैं तब खाना बनाओ। सुबह लाइव का टाइम है इनका 9, दोपहर में, रात में 9। दोपहर में कब भैया? 1 बजे कि 2 बजे? कब होता है लाइव दोपहर का?
2 बजे। ओके भैया, 2 तो बजने जा रहे हैं, बज गए 2। ठीक है, अभी हम 15-20 मिनट में अपनी लाइव एंड कर देंगे, आपका सपोर्ट कर देंगे। दोपहर में 2 बजे, समझ गई मैं। आपकी बात तो बिल्कुल राइट है भैया, बट थोड़ी सी ना समय की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। हम तो अपनी लाइव देखते हैं, वो चालू करके छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद काम करते रहते हैं। अब आपके लाइव में जुड़ने का मतलब कि हम कंटिन्यू कमेंट ना करें तो अच्छा नहीं है। आज मैं सुबह से लाइव पे बैठी नहीं हूँ, लाइव चल रही है, काम कर रही थी। हेलो, कैसी हैं आप? अनमास्क वर्ड। मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आपकी कृपा है। ऐसी बात नहीं है भैया, हमारी कृपा कुछ नहीं हो सकती है। फोन चार्ज भी नहीं। कहाँ रहती हैं आप? घर पर रहती हूँ भैया। बोलो। थैंक यू सो मच भैया, दीपक भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिटी दिल्ली में रहती हूँ भैया। दिल्ली में जाओ यार, सब गए, कपड़े डाले चले जाओ। मैं नहीं जा रही हूँ तो तुम्हें चले जाओ। हम लखनऊ से हैं। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद परिचय बताने के लिए।
सुपर सुपर सुपर, थैंक यू भैया, थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू सो मच। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम दीदी, जय भीम। भारती भाई, खाना ना हुआ कि नहीं? हम तो सुबह से अभी काम से अभी फ्री हुए हैं। अभी फ्री क्या हुए, भी बहुत काम है। आपको चिकन का सूट गिफ्ट करना है? नहीं भैया, सॉरी, आपका इतना ही प्यार काफी है मेरे लिए, गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। भाइयों का इतना ही प्यार काफी है, गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है भैया। भगवान ने हमें, हमारे महापुरुषों की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास सब चीज है। आप कहाँ से हैं दीदी? मैं अपने घर से हूँ भारती भाई। मैं अपने घर से हूँ, आप कहाँ से हो बताओ? लखनऊ वाला, मैं भी लखनऊ वाला देखी हूँ, ऐसा बात नहीं है भैया। लखनऊ मेरा भी जाना समझा हुआ है, मुझे बता ही नहीं आप कि आप कहाँ से हैं। अच्छा भारती भाई, आपको पता नहीं है मैं कहाँ से हूँ ना। क्या क्या बोलते हो? ओके दीदी, थैंक यू भैया। मुझे आपका बस इतना ही प्यार काफी है, आप सभी भाई इतने ही प्यार देते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता ही नहीं है दीदी। अच्छा, आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है, वैसे भाई को पता भी नहीं रहना चाहिए। कंचन जी आना, रीना गौतम कॉमेडियन की लाइव में प्लीज। जरूर आऊंगी भैया, अभी आ रही हूँ मैं, 15-20 मिनट के बाद आ रही हूँ। अगर इस आर्टिस्ट नहीं आ पाई तो दूसरी से आ जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। आज मैं अपना कोर्स का वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ दीदी। ओके भाई, ओके करो, देखूंगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक्स भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमको भी आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं उसी में ज़्यादा बिजी हूँ। अच्छा, एडिटिंग कर रहे हो क्या? जय भीम, नमो बुधाय दीदी जी, कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? खाना खा लिया, दवा खा लिए दीदी जी? जय भीम, नमो बुधाय रवि भाई, थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो अभी खाना नहीं खाई हूँ, सुबह से काम करते करते इतनी बिजी थी ना, लाइव चली रही थी, पता नहीं चल रहा था कौन आ रहा कौन जा रहा, अपने काम में मस्त थे। अभी मैं जस्ट नहा के 5 मिनट के लिए छत पे गई थी, फिर आ गई नीचे। अभी खाना ना कुछ नहीं खाई हूँ भैया। अभी तो मैं 25 GB डाटा यूज कर लिया हूँ, 25 GB डाटा यूज कर लिए हूँ उसको अपलोड करने में। ओके बाय भैया, दीपक भैया बाय बाय, थैंक यू। कोर्स का वीडियो है? अच्छा ठीक है, अपलोड करो। और दीदी बढ़िया है? निरंजन गुर्जर, बिल्कुल भैया मैं बढ़िया हूँ, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। जय भीम, नमो बुधाय, कैसे हो भैया आप? निरंजन भैया कैसे हो आप? निर्जर है, निर्जन, गलत तो नाम नहीं पढ़ रही हूँ भैया? कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ भैया, आप बताओ आप कहाँ से हो? ऐसे यदि ऑनलाइन कोर्स लेता तो 3500 रुपये लगता, 3500 रुपये लगता। अच्छा भैया, अच्छी बात है ना, करो ऐसे, बच्चे भी कुछ सीखेंगे। मैं भी बढ़िया हूँ दीदी। ओके भैया, थैंक यू, बढ़िया रहना चाहिए। कहाँ चले गए रवि भैया? नहीं नहीं, सही नाम पढ़ रही हैं, निरंजन गुर्जर नाम है। अच्छा भैया,
निरंजन गुर्जर नाम है, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है भैया। नाम की स्पेलिंग कुछ गलत नहीं लिखी है। और लोड करके टेलीग्राम के माध्यम से भेज देता हूँ, जिससे 2-3 हजार मुझे प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, झूठ की सच? नहीं तो स्पेलिंग गलत नहीं है निरंजन की भैया? लो भारती बताना, ये जो निरंजन भैया के नाम की स्पेलिंग है, मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग में, जो आप मानो वही। लो भारती बताना, ये निरंजन भैया के नाम की जो स्पेलिंग है, निरंजन जो लिखा है, बता रहे हैं निरंजन नाम है, निरंजन की स्पेलिंग अच्छी है, सही है? हाँ, निरंजन ऐसे रहेगा। भैया के नाम में बताओ स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं? मिस्टेक है ना? मिस्टेक है भैया। थोड़ा सा कह दीदी, हाँ वही तो कह रही हूँ। अगर हम ऐसे शॉर्ट में पढ़े तो भी निराजन गुर्जर पढ़ेंगे। जो यन है ना, अगर वो जे से पहले होता तो सही रहता। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ भैया, अभी आप भी ध्यान दिए हैं, या थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ ना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं निरंजन भैया, बताना। मैं इस बार लाइव के चक्कर में अपना कस्टमर दूसरे को दे दिया था दीदी, जिसके कारण मुझे 3 से 4 हजार रुपये का नुकसान भी हुआ है। अच्छा, इतना नुकसान काहे करवा रहे हो भैया? हम तो बकरियां में टाइम पास कर रहे हैं। आप कहाँ पर, घर पर हो क्या? झूठ काहे बोल रहे हो भैया? निरंजन भैया, बकरी वकरी कहाँ चरा रहे हो आप? लेकिन अब दोबारा भूल मैं नहीं करूंगा। अच्छा भैया, हमें एमपी से गुना जिला। अच्छा, पहले खुद का देखना है, उसके बाद किसी का। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। पहले खुद का देखो, फिर बाद में किसी का देखना। जाओ, टाइम हो गया, कपड़े डाल लो। वो तीनों चले गए हैं। बिल्ली देखो कैसे जा रही है जीने पे, ऊपर वाला खुला तुरंत आ जाती है। खेतान में? अच्छा, खेतन में मतलब बकरी चरा रहे हो। अच्छी बात है भैया, कुछ तो करना चाहिए। मैं ऑनलाइन काम करके अपना पैकेट खर्चा निकाल लेता हूँ दीदी। ओके भैया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को भी सिखा दो ना कुछ, कि हम लोग बैठे कुछ अपना काम कर लें, हम भी कुछ निकाल लें। हमें तो हाथ फैलाना पड़ता है ना, हस्बैंड के सामने पैसे दो, ताकि रिचार्ज या अन्य खर्चा के लिए घर वाले का सहारा ना ले सकूं, नहीं ले सकूं।
इतना ही काफ़ी है भैया। आपकी अच्छी सोच है। अरे! मज़ाक उड़ा रही हैं दीदी, मज़ाक नहीं, सही बात बोल रही हूँ भाई। हिसाब देना पड़ता है, पैसा माँगो ना, क्या काम करना है, कहाँ लगाना है। कम से कम अपना पैसा रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा ना, क्या करी? हम लोग भी थोड़ा-सा अपना ही खर्चा निकाल लें। मज़ाक नहीं कर रहे हैं भाई। काम नहीं करते हैं तो घर के डरते हैं, करना तो पड़ता है ना दीदी। डाँटते हैं, हाँ? क्या करते हो भाई? पढ़ाई-वढ़ाई करते हो? निरंजन भैया बताओ। पढ़ाई-वढ़ाई करते हो कुछ? ऑनलाइन काम करो। कैसे ऑनलाइन काम करूँ बताओगे तभी तो, हमें तो कुछ पता ही नहीं कैसे करना है। सिखाओगे तभी तो, हमको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ अपने फ़ोन से। फ़ोन से होता पता, पर कैसे होगा ऑनलाइन काम? इतना तो बताओगे कैसे क्या करना होता है उसमें? रेड वाली जैकेट तो धो दिया, एक वाली बेड में निकाल के दूँ? फिर क्या पहन के जाऊँ? जैसा किसी का जात निवासी और आप प्रमाण पत्र आधार एड्रेस अपडेट। समझ गए। समझ गई भैया, पर हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ से कर पाएंगे बताओ? हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे कर पाएंगे बताओ? स्कूल। स्कूल स्कॉलरशिप और किसी चीज़ का फॉर्म भरना। स्कॉलरशिप। अच्छा भैया। बहुत ज़्यादा झंझट है इन सब काम में, हम कर भी नहीं पाएंगे भैया। हमें तो इंग्लिश ये नहीं आती है तो कहाँ से कर पाएंगे जब पढ़ाई नहीं किए हैं बताओ? स्कॉलरशिप, वही तो हम भी कह रहे थे।
दीदी आप लाइव बंद नहीं करना, मैं आता हूँ कुछ देर में। ओके भाई ठीक है, मैं भी काम करने जा रही हूँ, अभी कुछ खाई हुई नहीं हूँ। सब लोग कहीं गए हैं, हस्बैंड भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना था, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। बड़े बड़े लोग झुकाते न सिर, बड़े बड़े लोग झुकाते न सिर, बाबा मर चला कलमिया के तीर, बाबा मर चला। कल्लू गए पूछा? दे ब्लैक वाला निकाल के, रुक जाओ 1 मिनट। कल्लू गए पूछा थे? हाँ सब गए, कब गए? वो सब साथ में गए हैं। कल्लू? हम्म। हटा के। बोलो दीदी, बोलो रवि भैया, कहाँ चले गए थे आप? पहुंच गया क्या? मैं कब से इनको जगा रही हूँ, जाओ, सुन ही नहीं रहे हैं। खाना क्या है? पढ़ रही हूँ भैया, बात हो रही थी, हस्बैंड किसी से बात कर रही थी, इसलिए नहीं पढ़ा। ये लगता है चंद लोग साथी कर लो। क्यों नहीं खाया है आपने खाना दीदी जी? दवा भी नहीं खाया होगा फिर आपने। नहीं भैया सच्ची अभी नहीं, मैं बस 10-15 मिनट पहले नहा के छत पे गई थी, 5 मिनट, वही फिर वहां से आई नीचे, हस्बैंड को जगा रही थी ना, कहीं जाना है, मैं आपसे बताई नहीं थी, वो पापा जो थे बड़े वाले, उन्हीं के घर जाना है, सब लोग गए, यही रह गए हैं, मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू रवि भैया। बताओ आपने खाना खाया? अब मैं जा रहा हूँ दीदी। कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ देर में आता हूँ। ओके, मेरा कमेंट पढ़िए ना ऊपर वाला। पढ़ा तो भैया, इतनी स्वास्थ्य सही नहीं है फिर भी आप इतना लापरवाही क्यों करते हो? कभी कभी हो जाता है भैया, जब ज्यादा काम हो जाते हैं ना, उसी में बस उलझी रह जाती हूँ, फिर खाना पानी कुछ नहीं दिखता है। मेरी एक बनियान थी वो गरम वाली। कौन सी गर्म वाली पढ़नी? यहाँ पे है। जो यहाँ लाइन में। हाँ हाँ, ब्लू वाली ना। नहीं मिलेगा, मैं खोज रही हूँ, पैंट अपना प्रेस कर लो, मैं खोज के दे रही हूँ। बताओ ऐसा करना चाहिए आपको? नहीं भैया करना तो नहीं चाहिए, पर हो जाता है। इसीलिए तो सबसे डांट सुनती हूँ, क्या करूँ। पहले सोचती हूँ काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए। आपका हुआ खाना पीना? थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खाना हुआ रवि भैया?
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, जरा कुछ कपड़े खोज के दे दूँ हस्बैंड को, वो जा रहे हैं।
थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा लो भाई, भारती भाई खाना खा लो। मैं तो रोटी नहीं खाती भैया। आप लोगों की फेवरेट रोटी होगी, चावल नहीं। मेरा फेवरेट चावल है। वो सब बाव के साथ आ रहे हैं क्या? कहाँ चले गए रवि भैया, भारती भाई? क्या हो गया, कहाँ लौट आ रहे हो? पैसा, पैसा दो, पैसे दो। हाँ? पैसा कहाँ से? दो कल बस देनी है का? नहीं। कल बस रिचार्ज करोगी? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। जय भीम, मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो आप? बढ़िया है जी, ओके भैया, थैंक यू। खाना पीना हुआ? मैं तो खाना खाने बैठी हूँ भैया।
बिल्कुल ठीक है भैया, आप सुनाइए। मुझे भी शंका लग रहा था कि आप खाना खा रही हैं, बढ़िया इसमें सोए हुए हैं। शंका काहे लग रहा था भैया, मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाई थी, काम काम कर रही थी, तो अभी खाई हूँ खाना। खाना खा रही थी ना, खाना जूठा था इसलिए नहीं पूछी आपको। बढ़िया इसमें सोए हुए हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो है आ रहा था, उसे लगता कि कोई खाना खा रहा। ओके भैया। सामने तो आ जाओ आप। आ रही हूँ भैया, अभी 10 मिनट वेट करो, थोड़ा सा आ रही हूँ। दवाई खा रही हूँ भैया, थोड़ा सा खा लूँ। दवाई तो जिंदगी की आधार है ना, जीने के लिए खाना है। जीने के लिए दवाई खानी पड़ती है भैया, हमें क्या बताएं आपको। आज तो दिल्ली में ठंड बहुत तेज है, सही बात है। आज ही नहीं तेज है भैया, कल से ठंडी काफी है दिल्ली में। ठंड तो वैसे रोज ही थी, लेकिन कल से ज्यादा ही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए अब, मैं सुन रही हूँ।
टॉपिक लगा लो आप, जो है ठंड इतनी तेज लग रही है। बाल गीले हैं ना भैया, धुली हूँ अभी, सूखे नहीं है इसलिए, नहीं तो चुन्नी खुद ही डाल लेती शर्ट पे। ठीक है, मेरा ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए, हमेशा ठीक ही रहना चाहिए। इस समय कपड़े सिल रहे हैं क्या? नहीं भैया, इमरजेंसी कोई होती है कभी कभार सिल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि कपड़े सिलती ही रहती हूँ। मैं अपने कपड़े खुद ही दूसरे से सिलाती हूँ, जब किसी का इमरजेंसी होती है तब सिल लेती हूँ। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं भैया। ये शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि अपना काम करने में, काम वो करो जो अच्छा लगे बस। ये नहीं कि काम छोटा बड़ा से नहीं, मतलब इज्जत से काम करो, उसमें शर्म नहीं। जिस चीज में शर्म आने कोई आज के टाइम में लोग उसमें शर्म आ ही नहीं रहे हैं। काम कोई हो चाहे छोटा हो बड़ा, काम तो काम है। अपना काम काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल राइट है। बिल्कुल किया भैया। नहाने के बाद क्या सुबह सुबह उठ के सबसे पहले करते हैं? ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद ही करें, सुबह सो के उठते हैं सबसे पहले करते हैं।
अच्छा गाना भी गाती हैं क्या? नहीं भैया, गाना तो नहीं गाती हूँ। गाना तो नहीं गाती हूँ भैया, किसने कहा आपको गाना गाती हूँ? मम्मी गुनगुनाते हुए गाना की तरह गा रहे थे, तो मैंने कहा लगता है गाना भी गा रही हैं। अच्छा, उतना तो हर कोई गुनगुना देता है भैया। जिसको आता है वो भी गुनगुना देता है, जिसको नहीं आता वो भी गुनगुना देता है। घड़ी चल रही है, टिक टिक की आवाज आ रही है। सही कहा आपने। सही कह रहे हो भैया।
शंका जो है सबसे बड़ी बीमारी है। किस चीज की शंका भैया? शमशेर राज भैया जी, किस चीज की शंका बताओ? शंका किस चीज की आप बताओ? आप लगता है कुछ काम कर रहे हैं। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल राइट है। काम नहीं कर रही हूँ, किसी का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं भी लाइफ पे किसी का सपोर्ट कर रही हूँ भैया। जो मुझको करते हैं उनको करना पड़ जाता है ना। तो अपने लिए नहीं, शॉर्ट पर नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। आप लगता है कुछ काम कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय वीर भैया जी। दूसरा फोन कहाँ पर है? लाइव चल रही है किसी की। बोलो भैया, बोलो वीर भैया जी, क्या बात है? दीपक भैया के लाइव में रीना गौतम से जो आईडी है ना दीदी का, अमन सिस्टर को लाइक कराओ, अमन सिस्टर को लाइक कराओ। अच्छा भैया, लेकिन अमन दीदी को इस वाले फोन से ज्वाइन नहीं किया है मैंने, जिस पे मेरी लाइव चल रही है उसी पे किया है। साधना सिस्टर भी है क्या? बताना भैया। मैं तो अभी फ्री हुई आधा घंटा पहले भैया। मैं तो सुबह से देखे आप जब लाइव में थे ना, फिर भी मैं काम कर रही थी। फिर म्यूट करके फिर काम करने लग गई। आईडी बताओ भैया इसमें। मेरे पे उनका तो कोई कमेंट भी नहीं है कि इसके माध्यम से मैं इस पे भी ज्वाइन करूं। कोई भी कमेंट नहीं है। मैं आईडी देता हूँ। ओके।
एक मिनट। ये है आरडी। ओके भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय अमर भैया जी, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोस्ट वेलकम है आपका। अब तक कहाँ थे आप? कैसे हो बताओ? कैसे हो भैया? समर भैया कहाँ चले गए?
जय भीम भैया, कहाँ चले गए? आपको बुलाती रह गई। क्या कर रही हो? बैठी हूँ भैया, आप बताओ कैसे हो? आप बताओ भैया कैसे हो? फिर जब चला जाऊंगा तब कमेंट पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। फिर से भैया। सॉरी। भैया नहीं, भाई बोलूंगी, सॉरी। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी? बाय मिस्टेक, नो सॉरी, बाय मिस्टेक। हाँ। अच्छा। और बताओ कैसे हो आप? मेरा खाना पीना हो गया, और आपका? मेरा भी अभी हुआ है, 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले। क्या क्या खाए आज आप? मैं दाल चावल सब्जी, बस रोटी नहीं खाती भैया। रोटी मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। आप क्या खाए हो भैया, कुछ स्पेशल? आप कुछ स्पेशल खाए होगा, बताओ। हाँ जी, क्या खाए हो बताओ? स्पेशल में क्या था? मैंने खाया दाल भात और पपीता की सब्जी। ये स्पेशल था। अच्छा। ओके भैया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय गौतम भैया जी। थैंक यू सो मच, कैसे हो आप? अच्छा। हंस रहे हो भैया ना? स्पेशल। फिर से भैया। अच्छा, कोई बात नहीं है, देखो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बहनों के लिए भाई भैया ही होता है हमेशा। नाराज नहीं होते हैं समर भाई। लाइक कर दिया सिस्टर जी, ओके भैया, थैंक यू सो मच बड़े भैया जी, कैसे हो आप? फैमिली में सब लोग कैसे हैं? गौतम भैया। जी जी, ये चैनल को सब्सक्राइब कराओ। अच्छा, इस चैनल को सब्सक्राइब कराऊं? सुरेंद्र भैया, समर भैया को ज्वाइन कर लेना, रिटर्न कर देंगे, आपके पास ब्लू है ना? ठीक है सिस्टर जी। ओके भैया। मैं रिटर्न कर दूंगा, मुझे पता आप रिटर्न कर दोगे। कहने की जरूरत नहीं है, इतना तो विश्वास है। जी ओके सिस्टर जी, ओके भैया, थैंक यू। समर भैया, स्पेशल में आज बस इतने ही खाए हो? फिर लाइव आऊंगा आप लोग के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप लाइव कब आओगे? जय भीम भैया, जय भीम। जल्दी वो दिन आए कि हम आप लोग को देखें लाइव में। आप लोग तो अपनी कोई भी फोटो पिक्चर नहीं लगाते, डीपी कम से कम अपनी लगा दो ना। जी जी, आप कभी आओ ना साधना जीजी की लाइव में, हम तो रोजे जाते हैं भैया। समर भैया, हम तो रोजे जाते हैं। आप हमको नहीं देखते हो क्या साधना दीदी की लाइव में?
हम रोज जाते हैं भैया साधना दीदी की लाइव में। अरे नहीं जीजी, हम लोग का बहुत दुश्मन है यूट्यूब पे। अच्छा, दुश्मन है? कौन कौन दुश्मन है? मेरा मतलब है दोनों साथ में लाइव आओ। हम दोनों साथ में एक दिन लाइव आए थे, आप उस दिन नहीं आए थे। साधना दीदी और हम दोनों साथ में लाइव आए थे, आप नहीं देखे थे ना? आप नहीं देखे थे ना समर भैया? कौन दिन? दिन कौन सा याद नहीं आ रहा मुझे। 4-5 दिन पहले। ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 4-5 दिन हुआ। नहीं, मैंने नहीं देखा था। हम लोग ना 11 बजे, 11 बज के 15 मिनट पे लाइव स्टार्ट हुई थी, चली थी 3 बजे तक। ज्वाइन कर लिया है समर भैया जी को। ओके भैया, थैंक यू समर भैया जी, रिटर्न कर देंगे आपको। फिर से भैया, इतना काहे परेशान करते हो समर भाई? भैया बोलने में क्या दिक्कत है? छोटे हो तो इससे कुछ नहीं होता है। ओके ब्रदर, मैं आपको 5 मिनट में रिटर्न कर दूंगा लाइक कमेंट के साथ। 5 मिनट में नहीं रिटर्न करना समर भैया, क्या फायदा, फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। कम से कम 4-5 घंटे का टाइम, क्योंकि चैनल दोनों लोगों का मोनेटाइज नहीं, अभी तो भैया न्यू बनाए हैं। हाँ, अनसब्सक्राइब जाएगा फिर क्या फायदा ज्वाइन करने में। क्या हो जाता है? अनसब्सक्राइब हो जाता है। जो हम सब्सक्राइब करते हैं ना, तुरंत रिटर्न करने पर अनसब्सक्राइब हो जाता है बाद में। कैसे? अपने आप हो जाता है, एक रूल्स है, यूट्यूब का प्रोसेस है, उसको अपने आप हो जाता है। कैसे बताएं, अपने आप ही हो जाता है। कल रिटर्न कर देना भैया जी। हम्म। ओके। समर भैया, आप कुछ हमको रिझाते नहीं हो ज्यादा। कल रिटर्न कर दूंगा, हाँ, कल परसों तक आपको जो फ्री हो जाना रिटर्न करना, अस्थाई से, तत्काल में नहीं। ओके, थैंक्स। बताओ सुरेंद्र भैया, आपका खाना पीना हुआ कि नहीं बड़े भैया जी? भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? जय भीम जय भीम। समर भैया, आपसे पूछा नहीं भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? बताओ भैया, भाभी कैसी हैं? जय भीम जय भीम। समर भाई बताओ, भाभी जी कैसी हैं? जय भीम, जो पूछ रही हूँ उसको बताओ, जय भीम। अब रिझाओगे। मैं नहीं पढ़ूंगी यार, अब कमेंट नहीं पढ़ूंगी। मैं पूछ रही हूँ भाभी कैसी है, बता ही नहीं रहे हो। जी हाँ सिस्टर जी, हो गया है। ओके भैया, थैंक यू। अभी ड्यूटी पे हो गौतम भैया? गौतम भैया, मैं आपको दूसरी आर्टिस्ट से ज्वाइन करती हूँ। कहाँ चले गए समर भैया? आपकी भाभी ठीक है? ओके भैया, थैंक्स, ठीक ही रहना चाहिए।
जी हाँ सिस्टर जी, ड्यूटी पर हूँ। ओके भैया। आप जिम भी जाते हो भैया कि करवाते हो? जाते हैं हाँ। मैंने आपको दूसरी आरडी से ज्वाइन कर लिया गौतम भैया। जो एक ही गौतम आरडी मेरी है ना, उसी से मैंने ज्वाइन कर लिया अब। समर भाई कहाँ चले गए बताओ? थैंक्स सिस्टर जी। ओके भैया, थैंक्स किस बात का? थैंक्स नहीं बोलते हैं बड़े भैया जी, आप तो हमसे बड़े हो। आप हमसे बड़ी हैं सिस्टर जी। अरे नहीं मेरे भैया, ऐसा मत बोलो। ऐसा मत बोलो बड़े भैया जी, मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ भैया। कैसे आप देख लिए मैं आपसे बड़ी हूँ बताओ? आप मेरे से बड़े हो भैया, मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ। ऐसा ना बोलो भैया। सब लोग हमसे छोटे ही क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा कहीं तो नहीं भैया कि बड़े रहेंगे तो कुछ देना पड़ जाएगा बहनों को, इसलिए आप लोग छोटे बनते हो क्या? मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। सारे भाई बोलते हैं हम छोटे हैं, भैया मत बोलो भाई बोलो। पहले ही डर जाते हैं लोग।
हम आपको बड़ी बहन मानता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे से बड़े हो, ऐसा काहे बोल रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे कहने पर सपोर्ट करने आने के लिए। नो भैया, किसी बात का कोई थैंक यू नहीं। आप हमारे सबसे बड़े आदर्श भाई हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। थैंक यू नहीं भैया। इंसान का बस एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा विचार देखा जाता है बस, और कुछ नहीं, और कुछ मायने नहीं रखता भैया। इंसान का प्रेम ही सब कुछ करवाता है। आप बहुत समझदार हैं सिस्टर जी, आपकी समझदारी अच्छी लगनी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। कम से कम आप हमें उस लायक समझें, बट हम वैसे नहीं हैं, आप लोगों से ज़्यादा समझदार नहीं है भैया। बस हम सोचते हैं कि मत इज्जत मर्यादा से एक दूसरे का सम्मान करिए, यही होता अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं आके छिछोरपना करते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता सच्ची। मेरी दोनों बहनें मेरे लिए मेरी एक आवाज पर चली गई। कोई बात नहीं है भैया, आवाज क्या, कुछ भी नहीं है। इतना नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई के लिए, बताओ। बहन भाई हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार होते हैं। भाई भाई में बल्कि उतना नहीं बनती है जितना भाई और बहन में बनती है। गलत तो नहीं बोला वीर भैया जी, बताना। सही कहा कि नहीं भैया? टेंशन मत लो, भाई भी एक आवाज पर आएगा। मुझे उम्मीद है भैया, टेंशन की कोई बात नहीं है। सही बोल रही हो सिस्टर, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। मैं जिसको समझती हूँ अपने जैसा समझती हूँ, और हर एक तरीके से, हक अधिकार लड़ाई झगड़ा जो भी होता अपनापन, हर एक तरीके से अपना ही समझती हूँ ऐसे ही। जी हाँ सिस्टर, बिल्कुल, थैंक्स सुरेंद्र बड़े भैया जी।
कोई रिश्ते का कद्र करता है भैया, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, अपनों जैसा ही करता है, पर सबके अंदर ये फीलिंग नहीं होती है। सब अलग जो होते हैं दूसरे होते हैं ना, तो पराये को दूसरे ही नज़र से देखते हैं, अपने को दूसरे ही नज़र से देखते हैं, पर उनकी ये सोच गलत होती है। कल साधना सिस्टर और अमन सिस्टर का क्लब है 4:30 शाम को। ऐसे टाइम पे रखते हो भैया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं 1 डेढ़ बजे 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल 1 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मुझे। मैं सुबह में 10 बजे के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री रहती हूँ। देखते हैं पंजाबी और हिंदी की जुगलबंदी। कोई बात नहीं, वो तो दीदी सारी भाषा समझती हैं, हिंदी भी समझती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी तो सब कुछ समझती हैं दीदी, इंग्लिश हिंदी सब समझती हैं, वो हर एक चीज़ों में टैलेंट हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, जाते हैं तो सोचते हैं क्या लिखा है, क्या लिखें। उनके लिए नहीं दिक्कत है भैया। सही बात है। हम लोगों के लिए दिक्कत होती है ना। इंग्लिश तो आती नहीं है, हिंदी आती है बस, और तो कोई लैंग्वेज आती नहीं। लाइट भी गई। लाइट भी चली गई वीर भैया जी। अभी देखा था ना लाइव में उनकी, हाँ मैंने देखा था, आप हिंदी में कमेंट कर रहे थे, दीदी सारी समझ रही थी, वही तो मैं भी देख रही थी। मैं जाती हूँ भैया दीदी की लाइव में, ऐसी बात नहीं, दीदी से पूछना, मैं उनकी लाइव में जाती हूँ, चाहे 2-3 कमेंट करूँ, लेकिन जाती हूँ, लाइक करके कमेंट करके चली आती हूँ। हिंदी कोई नहीं लिख रहा था, सब पंजाबी या इंग्लिश चल रही थी, हाँ मुझे पता है। गलत नज़र से देखने वाला अपनी नज़र से खुद गिर जाते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है गौतम भैया जी। देखो किसी को कुछ गलत कोई बोलता है ना, तो वहां से गाली सुन के आता है भैया, अपने साथ साथ अपने घर की माँ बहनों की भी गाली सुनवा के आता है, चाहे गलती उसकी बेशक ना हो, माँ बहन की गलती ना हो, लेकिन उसकी गलती से ना माँ बहन भी गाली सुनती हैं, लेकिन उनके क्या, उनकी नहीं आदत हो जाती है गाली सुनने का। उनको बताती तो सही कि मैं वीर जी की बहन। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही रिश्ते, ऐसे ही सम्मान हमेशा बना रहे बस। जी हाँ सिस्टर जी, बिल्कुल भैया, उन लोगों को कोई चीज़ की फिक्र परवाह नहीं होती, मतलब हम जाए किसी की लाइफ में गलत बोल के निकले, अरे क्या फायदा, गाली तो सुनते हो तुम लोग भी, समझ में नहीं आता। और कोई भी भैया गलत सुनना पसंद नहीं करेगा, वो भी तो उल्टा बोलेगा ही, और कब तक कोई सुनेगा। अगर प्यार से किसी को समझाया जाना समझ में आ रहा, तो उसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझाया जाएगा। अभी मैंने जब बताया कि मेरी बहन है कंचन सिस्टर, तो सिस्टर ने आपका कितना सम्मान किया। हाँ भैया मैंने भी सुना, क्योंकि वीर भैया जी ग्रेट तो है ही है, सबसे अलग है। पहले आपको वह एक गौतम समझ रही थी, इसलिए ना कि मैं इस एडिस गई थी ना, इस एडिस पहली बार गई थी, अभी मैं उस एडिस जाती ना तो तुरंत दीदी मुझको पहचान जाती हैं, ओ कंचन सिस्टर आ गई हैं।
वो समझ जाती हैं। जी बिल्कुल सिस्टर जी, सही बात है। हाँ भैया, क्या किया जाए, बस ये है कि समाज में अपने 2-4 भाई हैं जिनकी वजह से अच्छा लगता है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि मान-सम्मान उसी वजह से सबका बचा है। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लोग ऐसे ही आते हैं कि जो एकदम 1-2 कमेंट सही करेंगे, फिर उसके बाद अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। उस आईडी पर भी जब जाओ तो बताना कि मैं कंचन हूँ, वीर जी की बहन। ओके भैया, ओके भैया, थैंक्स। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे ही बोलेंगे दीदी से। साधना सिस्टर को भी तो मेरे नाम से जानती हैं वो। अच्छा, ऐसा भैया ना, वीर भैया जी आपको सब जानते हैं, हम लोगों को थोड़ी कोई जानता है। हम लोगों की परिचय पहचान तो आपके नाम से हुई है ना, आप ही हम लोगों को सबसे मिलवाए हो, इसलिए जितनी पहचान आपकी हम लोगों की थोड़ी है। अब तो वैसे साधना सिस्टर को अच्छी तरह से जान गई हैं। हाँ भैया, मुझको भी जानती हैं, अभी देखो मैं इसी वाली आईडी से जाऊं ना, तुरंत मुझको पहचान जाती हैं। ऑन हूँ। ओके बड़े भैया जी, थैंक यू। कर लो मजाक। मजाक नहीं वीर भैया जी, सच्ची मजाक की बात नहीं, रियल बोल रही हूँ कि हम लोगों की पहचान तो आपकी वजह से हुई है। पर उनको ये नहीं पता था ना कि आप मेरी बहन हो। हाँ, ये नहीं पता था, ये तो बात बिल्कुल राइट है। ये सही बोल रहे हो वीर भैया जी, ये नहीं पता था। हाँ जी, वीर भैया जी आपको पता है, मैं आपकी हर एक बात, आपने बताओ उस दिन, हाँ जिस दिन मेरे बड़े ससुर जी की डेथ हुई थी, उस दिन भी आपने मुझसे, मुझे तब नहीं पता था, आपने मेरे लाइव में सुबह आए थे, मेरे से रिक्वेस्ट किए थे, सिस्टर कंचन बहन आप जाना जरूर अमन जी की लाइव में। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं जाऊंगी, चाहे 2 ही मिनट के लिए जाऊंगी। फिर उसके बाद में मैं इतनी परेशान थी, जब मुझे इस बात का खबर चला, मैं इतनी परेशान थी, लेकिन मैं आपकी बात को मान करके मैं जरूर गई थी 2 मिनट के लिए। आपने बोले थे अमन सिस्टर और साधना सिस्टर का कलेव होगा, लेकिन हुआ नहीं था, अमन दीदी की अकेली लाइव चल रही थी। मैं गई, फिर 2-3 कमेंट करी, सॉरी बोल के चली आई कि दीदी मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, साधना दीदी से बोलकर मैं आ गई थी। और भी तब तक रवि भैया गए थे, उनसे भी बोली तो रवि भैया बोले कोई बात नहीं सिस्टर आप जाओ। ओ सिस्टर, थैंक यू नहीं भैया, एक रिस्पेक्ट होता भैया किसी का, उनका नेट का दिक्कत था। अच्छा भैया, यही होता है, एक दूसरों का सम्मान, एक दूसरों को अपनापन एक समझना, अगर आप समझते हैं तो हमारा भी फर्ज होता है आपको समझने का। एक के बनाने से नहीं बनता भैया, दोनों के कोलेब हो नहीं पा रहा था, वही तो मैं भी देखी नहीं था, अकेली दीदी की लाइट चल रही थी। आप लोग हमारी इतनी केयर करते हो हर वक्त, तो हमारा भी तो दायित्व बनता है भैया ना, कि आपकी बातों पे खरे उतरे।
अरे हम ज़्यादा नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर जो भी हमसे होगा उतना तो हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू भैया, सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। ऑन हूँ, मुझे पता भैया आप ऑन हैं। आप ड्यूटी के साथ साथ लाइव भी अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सही बात है सिस्टर जी। बिल्कुल भैया और वीर भैया जी, हम बस अपने जिन भाइयों को मानते हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो ये प्यार, एक सम्मान एक दूसरे के हम समझते हैं ना, ये रिश्ते हमारे हमेशा बरकरार रहें इसी तरीके से। हाँ जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। साधना दीदी की आज लाइव नहीं चली थी क्या फिर भैया? साधना सिस्टर भी गई थी वैसे उनकी लाइव पर। अच्छा भैया, मेरे जाने से पहले। मेरे जाने से पहले गई थी दीदी। हाँ जी, अच्छा भैया। साधना दीदी की आज लाइव नहीं चली थी क्या फिर भैया जी? अभी तो बोल रहा हूँ कि एक बार बोलने पर दोनों बहनें आ जाती हैं, तभी तो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जैसे आप हम लोगों का सम्मान करते हैं वैसे हम लोग भी आपका करते हैं और करते रहेंगे हमेशा।
हमेशा करते रहेंगे भैया। रिश्ते में स्वार्थपन नहीं होना चाहिए बस। आज वो लॉन्ग वीडियो में और पंजाबी शॉर्ट वीडियो बनाने में बिजी हैं। दीदी, साधना दीदी लॉन्ग वीडियो बना रही हैं भैया। अच्छा, पंजाबी शॉर्ट वीडियो भी बना रही हैं शायद। हाँ जी, अच्छा भैया। ऑन है सिस्टर जी, मुझे पता है भैया आप ऑन हैं। काम कर लीजिए भैया, परेशान ना होइए आप, मैं जान रही हूँ आप ऑन हैं। आप भी सबसे बेस्ट ग्रेट ब्रदर हैं, एक सबसे अलग हैं। सुरेंद्र भैया आप सबसे अलग हैं सच में, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उनको भेजे थे कुछ पंजाबी सॉन्ग। अच्छा भैया। वीर भैया जी, आपको पता है ये सुरेंद्र गौतम आर्टिस्ट जो ये भैया भी बहुत ही अच्छे हैं, सबको ये अपने जैसे समझते हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इनके पास थोड़ी सी टाइम का प्रॉब्लम होता है, जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ। नहीं तो भैया बहुत अच्छे हैं ये भी। जय भीम रवि भाई, जय भीम सौरभ भाई, नमो बुद्धाय। ओशान बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो भैया? फिर तो अच्छी बात है सिस्टर। हाँ वीर भैया जी, मैं जानती हूँ भैया को, जब से जानती हूँ तब से मैं ऐसे ही देखती हूँ। ओशन सर जय भीम नमो बुद्धाय वीर भैया जी की तरफ से। ओशन भैया इसमें तो रवि भैया है ही नहीं है, वो तो आए थे, बहुत पहले आए थे। जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी। सुरेंद्र भैया हमारे जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं भैया। अच्छा सिस्टर, अच्छा हूँ वीर जी, अच्छी बात है भैया। कहाँ थे सुबह से? पहले ये बताओ भैया, ओशन भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? आप झूठ बोल रहे हो, आपको खांसी आ रही थी ना कल, जुकाम था आपको। अभी स्वास्थ्य कैसा है भैया? सही बताना, झूठ नहीं। ओशन बड़े भैया जी बताओ सही सही, स्वास्थ्य कैसा आपका? अच्छे हैं भाई, झूठ भी बोल लेते हो भैया आप लोग। अच्छे हैं। खाना पीना कुछ खाए पिए? ड्यूटी में हो भैया की घर पे? हाँ जी बताओ ओशन सर, तबीयत कैसी है? सही कह रहा हूँ, आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, मैं नहीं बोलता झूठ। किससे बोल रहे हो वीर भैया जी, मेरे से? जिसके पास प्रूफ हो। जिसके पास प्रूफ हो, क्योंकि मैं सच का देवता। नो भैया नो, आप साधना दीदी के पास बोल सकते हैं ये चीज, पर मेरे सामने तो नहीं। ठीक है वीर जी, बहुत अच्छे हैं। ओके रोशन भैया, ड्यूटी में ओके, रूम पे भैया अपने घर पर? घर के आसपास माइक बज रहा है बहन, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है भैया? माइक किस चीज का क्या चल रहा है? कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है क्या?
मैं अभी कहाँ जा सकता हूँ? नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई थी भैया, इसलिए लोग मेरी कस्में खाते हैं। आपको मजाक लग रहा है, सबको पता है मैं सच का देवता हूँ। बिल्कुल वीर भैया जी, एकदम सही बोल रहे हो। 18 दिसंबर जयंती के उपलक्ष्य में दिसंबर बस चलेगा पूरा। अच्छा भैया, भूषण बड़े भैया जी, 22 नंबर पर लाइक किया हूँ बहन। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। पर ट्यूशन जाना और क्या, उसके बाद ट्यूशन जाना बेटा। कल संडे हो जाएगा ना। कल मैम बताएंगी। कोई बात नहीं है, मंडे को पेपर है। हाँ मंडे को पेपर, इसलिए कह रही हूँ। इधर आ, इधर आ जा इधर। मंडे को पेपर है ना बेटा, ट्यूशन जाओ। श्रेया इधर आओ। चाचा से सब गए थे? हाँ सब थे। रिंकू चाचा पहले पहुंच गए। रिंकू चाचा थे, साहिल चाचा थे, पिंटू चाचा नहीं थे, साहिल चाचा थे, रिंकू चाचा थे, जितेंद्र चाचा थे।
बाय बाय भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब हम भी लाइव एंड ही करेंगे भैया। बाय बाय भैया, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं। बाय बाय भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।